Good morning, students. Good morning, fifth standard. Welcome you all once again in history period, that is EVS 2, lesson number 6, stone age, stone tools. And today we have to see the summary of this lesson and we have to write extra question answers. Okay. Actually, we had learned this lesson few days ago. Now let us see the summary, important point of this lesson. Okay. The selection of tools is determined by availability of resources, minimal use of time and energy, maximum efficiency, skill of handling tools acquired through practice. Okay. Types and forms of tools according to the type of task. If we saw a shiny object buried in the ground, what would we do to take it out? Perhaps we would scrap it. Scrap it means poke it. Kurechna जिसे बोलते हैं with our fingers. ठीक है. If that did not work, we might try to dig it out with a twig or a stick. अगर वो अपने हाथ की उंगली से नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या लेते हैं? हाथ में स्टिक लेते हैं. ठीक है. स्टिक और ट्विग. ट्विग यानी पेड़ की डाली जिसे कहते हैं. Then, if that too did not work, we would have to look for a pointed stone. फिर हम किसका यूज करते हैं? अगर उससे भी काम नहीं हुआ तो then we use pointed stones. जो नुकीला जो पत्थर है उसकी हेल्प लेते हैं. That should do the job. But if it still doesn't, then we would have to get an iron rod or to dig that shining object out. अगर लेकिन उससे भी काम नहीं बना समझो तो हम क्या हाथ में लेते हैं? Iron rod. ठीक है. And this shows that we need to choose the tool according to the demand of the task. मतलब जैसे हमारी टास्क है, जिस तरह का हमारा वर्क है, उस तरह से हमें हाथ में क्या लेना चाहिए? टूल्स. टूल्स यानी औजार या फिर हथियार. The following four factors determine the choice of tools. The following four factors determine the choice of tools. Okay, availability of resources, then minimal use of time and energy. Resources यानी संसाधन. ठीक है. Instrument or device we can say. Then minimal use of time and energy. Then maximum efficiency. Then skill of handling tools, which is acquired through practice. Now, stones, bones, sticks, and dried twigs were used as tools in the Stone Age. Stone Age period में stones means पत्थर, bones हड्डियाँ, sticks यानी लकड़ी, and dried twigs यानी सूखी हुई पेड़ों की डाली जिसे बोलते हैं, वो यूज की जाती थी as a tools यानी औजार के रूप में. Stone tools are found today, but the bone tools are rare. स्टोन टूल्स तो मिल जाते हैं लेकिन बोन यानी हड्डियों से बनाए गए टूल्स नहीं मिलते. Tools made of sticks and twigs have disappeared due to decomposition. Decomposition की वजह से क्या होता है कि ये जो टूल्स जो स्टिक्स यानी लकड़ी और पेड़ की ट्विग से बने हैं वो disappear हुए, नाम शेष हुए, नहीं दिखते. The period from which stone tools are found is called Stone Age. The period from which stone tools are found, जिस पीरियड से हमें स्टोन टूल्स मिलना शुरू हुआ है उस एज को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू पेलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज. क्या याद रखोगे? पेलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज, एंड न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज. Okay, keep it in mind. Old Stone Age, Middle Stone Age, and New Stone Age. Okay. Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Now, Stone Age tools and way of life. Let us see one by one. Number one, human species. ह्यूमन स्पेसीज जो है वो ओल्ड स्टोन एज में होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस है वो, एंड देन मिडल स्टोन एज में नेंडरथल मैन एंड होमो सेपियंस, एंड न्यू स्टोन एज में होमो सेपियंस सेपियंस. ओके. नंबर टू, स्टोन टूल्स. अभी हम देखते हैं कि वो कौन से स्टोन टूल्स यूज करते थे. ओल्ड स्टोन एज में कौन से ओल्ड स्टोन एज पीपल प्रीफर टू यूज ऑफ परक्यूशन टेक्निक.
कौन सा टेक्निक था उनका? परक्यूशन टेक्निक था. Tools of Homo habilis crude such as chopper and tools of Homo erectus were more proportionate and symmetrical such as hand axe. ओके, नेंडरथल मैन जो था एंड होमो सेपियन जो थे वो नेंडरथल मैन मेड स्मॉल टूल्स. क्या बनाते थे वो? छोटे टूल्स बनाते थे. टूल्स ऑफ होमो सेपियंस वेयर लाइट इन वेट एंड ड्यूरेबल. डिफरेंट टूल्स फॉर हंटिंग, फिशिंग, हार्वेस्टिंग एंड कटिंग ट्रीज. यानी वो डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करते थे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे, अकॉर्डिंग टू द टास्क दे यूज द tools. Okay, then devise technique to obtain long and narrow blade of stone to make sickle and knife. Okay, now न्यू स्टोन एज मैन जो था वो स्टोन टूल्स वेयर पॉलिश टू गिव अ स्मूथ एंड शाइनी फिनिश. ओके, नाउ नंबर थर्ड पॉइंट, वे ऑफ लाइफ. उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी? वे ऑफ लाइफ. ओल्ड स्टोन एज मैन वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड हंटिंग. ओल्ड स्टोन एज में जो मैन था, जो ह्यूमन बीइंग थे, वो एक जगह से दूसरे जगह क्या तक करते थे? वॉन्डरिंग, यानी घूमते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड हंटिंग. ठीक है, हंटिंग यानी शिकार करना. Then middle stone age man undertook agricultural and animal husbandry. खेती बाड़ी करता था और पशुपालन. Stayed at a place, एक जगह रहते थे for a longer period. And new stone age man undertook agriculture and animal husbandry and settled way of life. और इनकी लाइफस्टाइल जो थी वो सेटल थी, वो भी एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग करते थे और पशुपालन भी करते थे. ठीक है. Now stone age sites in India. Hatnora village in Madhya Pradesh, a village near Puducherry, Gangapur near Nashik, and Chirki, Nevasa near Nevasa. यहाँ पर ओल्ड स्टोन एज साइट्स पाई जाती है. देन मिडल स्टोन एज साइट्स, बैगोर इन राजस्थान, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, लालगंज इन गुजरात, एंड Patni in Maharashtra. Patni in Maharashtra. New Stone Age sites, area along Ganga River and South India. There are old Stone Age sites in Afghanistan and Sri Lanka. Okay. Now, some more Microlithics. Microlithics means that is very minute blades were carved out of big stones by fluted core technique. माइक्रोलिथिक्स मीन्स व्हाट? वेरी माइन्यूट ब्लेड. वो कैसे रहती है? बहुत ही धारदार रहती है, उसे कहते हैं माइक्रोलिथिक. ये देखो, सी द पिक्चर ऑफ दिस माइक्रोलिथिक्स. ये देखो, ये जो पिक्चर है ना, बीच वाला, मिडल वाला, जहां पर मेरे फिंगर है, वो है माइक्रोलिथिक. सी द पिक्चर. In the Middle Stone Age, the stone blades used to make implements were removed from the stone by the fluted core technique. Flute means a long parallel sided depression. Depression means hollow. Hollow means पोपड़ी जिसे कहते हैं वो, hollow on the stone, and core means the original stone from which the blades are removed. After the blades were removed from the stone from all sides, the remaining core had such flutes on all sides. Blades removed with this technique are very minute, the size of a nail or slightly bigger. Hence, they are called microlithics. Micro means very small and lithos means stones. In the Middle Stone Age, arrows were made by fixing a microlithic at the tip of a stick. See here, see the picture. See the given picture on page number 28. Page number 28 पे जो picture दिए है ना, वो देखो, a fluted core, then microlithics Middle Stone Age, then arrows with microlithics at tips Middle Stone Age. Tips यानी क्या? Tips of the finger. ये जो portion रहता है ना, ये एकदम ऊपरी हिस्सा, इसे कहते हैं tips. Arrows with microlithics at tips Middle Stone Age. यानी जो ये जो है javelin जो रहता है, spear भाला, उसके बिल्कुल ऊपरी साइज में जो रहता है ना, ऐसा एरो करके जो रहता है, वही है ये. एरोज विथ मैक्रोलिथिक्स एज टिप्स मिडल स्टोन एज. ठीक है. देन फिश हुक और बोन्स, इससे मछलियां पकड़ी जाती थी. फिश हुक है ये, मिडल स्टोन एज में यूज किया जाता था. देन नाइफ, ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर अबाउट नाइफ. सुरी, a knife with an edge like a saw made by fixing microlithics Middle Stone Age.
Okay. Now, microlithics were fixed on top of a stick bone to make an arrow. Sickle and knife were also made by fixing macrolithics into the groove in a bone or piece of wood. Okay. Now here our summary of this lesson is over, and now we pass on to write extra question answers of this lesson. Let's start writing with me. Okay. Note down. 5 fill in the blanks are homework for you. Tomorrow I will tell you answer. Your homework is that read lesson carefully and find out the answer of the fill in the blanks. Okay. Let's start writing. Dash, like, dash like chimpanzee, use stones to break seeds and nuts. Okay. Number 2. Uses sticks to steer the ants out of ant hill. Number 3. Dash have been always using bones, stones, dry twigs, and sticks as tools. टूल्स यानी औजार या हथियार. ओके. नंबर 4. We rarely find the tools
made from dash, made from dash. Okay, made from dash. And the last one, means old. Okay, means old. ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है दिस इज फॉर योर होमवर्क. This portion is for your homework. Okay, dash uses sticks to scare the ants out of ant hills. Number 3, dash have been always using bones, stones, dried twigs and sticks as tools. And then number 4, we rarely find the tools made from dash, and dash means old. Okay, all this side is homework for you. Now next, number 6. Lithos means stone. Lithos means stone. Okay. Number 7. Meso. Meso means middle. M-I-double-L. Middle. Number 8. Neo is knee. Neo means knee. Okay. Then number 4. Homo habilis and Homo erectus belong to the old stone age. Homo habilis. And Homo erectus. Belong to the Stone Age. The first two stone tools made with percussion technique. In the old Stone Age, were crude. See your students, see the fill in the blanks. Here in this side, we have written the answer. यहाँ पर हमने आंसर भी लिखे हुए हैं. Okay, lithos means stone, meso means middle, neo means new,
Homo habilis and Homo erectus belong to the Old Stone Age. The first stone tools made with percussion technique in the Old Stone Age were crude. Okay. Now, next fill in the blanks. The Homo erectus was using different tools for different tasks. Though Homo sapiens in the Middle Age a revolution in the technique of making tools. Note down this to fill in the blanks. See on the blackboard. Homo erectus was using different tools for different tasks, and Homo sapiens brought about a revolution in the technique of making tools. Okay. Here now, take a screenshot of blackboard or and note down all the fill in the blanks in your copy. Solve your given homework today. Read the lesson carefully. And today we have to stop here. In the next period means tomorrow, we will write extra question answers, and that is answer in one sentence. Okay. Bye-bye. Take care.